बाकी दुनिया कॉफ़ी पे जीती है, मैं मैंगो शेक पे जीता हूँ. तो सुबह उठने के लिए आई यूजली इन ब्रेकफास्ट आई हैव वन मैंगो शेक एंड आओ मैंगो शेक बनाते हैं. So अब मैं आ गया हूँ अपनी स्टडी टेबल पे एंड द मोमेंट दिस मैंगो शेक इज ओवर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी. सो आई प्लान माई वे इन दिस वे कि जब सुबह मैं उठ गया उसके बाद मैं लेट्स से अप टिल 1 o'clock जो भी मुझे अपना रिवाइज करना है आई रिवाइज. सो टुडे आई प्लान कि मैं थोड़ी सी फिजिक्स करूंगा एंड थोड़ी सी बायोलॉजी करूंगा. सम डेज आई डू ओनली फिजिक्स, सम डेज आई डू ओनली बायोलॉजी. आज मेरा ये प्लान है, ठीक है. तो उसके बाद वंस आई एम डन विद दैट आई विल डू माई लंच एंड वंस वी आर डन विद माई लंच सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज कि उसके बाद मैं 2 to 5 PM के बीच में आई ट्राई टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई हैव प्लान्ड सो फार एंड कल मैंने डिसाइड किया होती कौन से टॉपिक्स करेंगे. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड कि मैं प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक करूंगा एंड उसके बाद फिजिक्स में आई ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स और दैट शुड बी माय डे टिल अराउंड लेट्स से 5 PM, है ना. तो चलो let's sit down for study and in the morning during this time when I'm having my mango shake I usually read some stuff that I put up for myself. अभी आपको दिखाता हूँ. So this is how my study table looks like usually and on this notice board I usually pin up things. I keep changing them. लिखता रहता हूँ जो मुझे याद करना होता है. So I've written one reaction for today. Periodic table mostly यहाँ लगा रहता है for any reference that I need and then I had these flags. तो उन पे जो भी मेरे को important चीज़ें लिखनी होती है मैं लिख के रख लेता हूँ and at some frequency I change them. So this is this. Right, so that was one really exhausting study session. I think now it's time I go for lunch and then once I'm back it's almost going to be 2 PM. So I think from 2 PM to 5 PM that's the actual time of the NEET examination. I would attempt a mock test so that I can prepare well and so okay, let's go for lunch. Chalo bhi lunch do. So next अब हम आ गए हैं मेरी मम्मी की गाड़ी में. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग इन द पैंडमिक. मैं घर आया था तो गाड़ी चलाना सीखा था, ठीक है. फिर ड्राइविंग टेस्ट भी दिया था तो एक बार फेल हो गया एंड दिस इज़ माई 3rd लर्नर लाइसेंस गोइंग ऑन. बट ऐसा नहीं कि मैं गंदी चलाता हूँ. तो अभी थोड़ी देर चलाएंगे, थोड़ा दिखाता हूँ आपको. चंडीगढ़ भी देखना है इस बहाने एंड अभी वैसे लॉकडाउन है सो वी वॉन्ट बी एबल टू गो एनीवेयर फार. तो दैट्स अबाउट इट. तो ये एक अच्छा पास टाइम है दैट आई एम डूइंग राइट नाउ इन द पैंडमिक. थोड़ा बहुत मम्मी आती हैं तो मम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है एंड मैं भी गाड़ी चलाना सीख लेता हूँ. So, इससे टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जिस भी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम अपना टाइम स्पेंड कर सकें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, उसे उस टाइम से स्पेंड करने का कोशिश करें. इफ़ यू आर ऑलरेडी अबव 18 maybe you can learn driving with your father or with your mother and थोड़ा सा टाइम आपका वो एक relaxing sort of time हो जाएगा. So I'm back and I think it's time for me to give a mock test. So let me just get everything out. So I usually used to have an OMR where I would fill up everything, one mock test for every day. And besides that, I used to keep my phone so that I can keep record of how much time I attempted everything in. So I think let's start. और ये लो जी आखिरी बबल डन. So now that I've attempted my mock test, before I begin analyzing it, I usually take a small break. I have finished my mock test in around 2 hours and 30 minutes. So that means that I have some time left from my time. So I'll go and take a walk. I usually try and take a rest during this time. And once I'm back, once I'm fresh,
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि आके इस टेस्ट को एनालाइज भी करना है, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आके जब एनालाइज करना है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन योर एनालिसिस इनटू आपको कौन सी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स यानी कि एक्सपेंसिव मिस्टेक्स लग रही थी, एंड विच मिस्टेक्स वर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है आफ्टर यू आर डन विद योर एनालिसिस. तो चलो, लेट्स गो अहेड एंड टेक अ ब्रेक. It's basically evening, guys, so I usually come out here to the park for a run or sometimes for jogging. Sometimes my friend is here with me. आज lockdown था, so today I am alone. And when I am alone, I usually listen to music on my headphones. And there's one more productivity tip that I have for you guys, जो मैं भी कभी-कभी करता हूँ. I open Spotify and I listen to some podcasts, जैसे podcast for medicine या podcast for surgery, जहाँ पे वो एक छोटा topic 10-15 मिनट में ऑडियो की फॉर्म में पढ़ाते हैं. In fact, you can even open up a video on your phone. And it's very easy for you guys. आपकी biology की NCERT है. You can listen to it in an audio form or in a video form, and you can retain as much as possible while also coming out for a walk and exercise. And like I told you, even preparation के time, I used to spend half an hour or 1 hour outside on a walk, either with my parents या फिर थोड़ी running के लिए चला जाता था, या even just go to the market, right? And besides that, exercise और sports अगर खेल सकते हो, that's the best thing. Weekends पे मैं usually बैडमिंटन या टेबल टेनिस में से कुछ खेलता था. So right, let's run. Okay guys, so I'm back from my short break, and now let's go and analyze our mock test. Now, like I told you, divide your analysis into silly mistakes and conceptual mistakes. And what you have to be very sure of is to do is identify कौन से chapters में आपको revision करने की जरूरत है. Because mock test से आप तभी सीखते हो अगर आप अपने chapters को improve करते हो. So that is what I'm going to be doing right now. So come on, let's quickly do the analysis of the mock test that I've attempted. तो एनालिसिस हो गया दोस्तों, स्कोर आया 675. ओके, एंड यूजुअली व्हेन आई यूज्ड टू गेट अ गुड स्कोर, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्कोर आता था, और आई यूज्ड टू इंप्रूव फ्रॉम माय प्रीवियस टेस्ट. सो आई यूज्ड टू रिवॉर्ड माय सेल्फ आफ्टर एवरी एनालिसिस. जैसे आज मैंने सोचा कि आज अपन डोमिनोज का खाएंगे, सो आई हैव डिसाइडेड टू रिवॉर्ड माय सेल्फ. सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स हैव समथिंग नाइस. Now one thing that was there for me, and I am sure it might be there for you also, is that हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारा mock test अच्छा ही जाए. There are times when our mock tests don't go well, and that is the time to motivate yourself. ठीक है, एक तो वो है जब तुम्हारा mock test तुम्हारी expectation के according गया. That is the time to reward yourself. And when it does not go as well, you have to stay motivated. You have to work on what you've done wrong, and only then you can move forward. So I had some motivational things in my room, and personally, one of them for me, it was my goal, the place where I wanted to study. And it does not necessarily have to be this place only. It can be wherever you want to be. You just have to visualize yourself well enough कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, and for that I have to work hard. So your motivation. Now there are basically a few more other things that I used to do to make my study more effective. So like I said, one of them was always motivation for me. So what I would always try to do is, there were a few songs that I would go to for motivation, and one of them was the speech by Shah Rukh Khan, 70 minute, right? So there used to be, one was this was another one that was very motivational for me, right? I hope you can recognize the song. Then this song was also there with my motivation, right? And I had even had the lyrics written on my walls, right, for this particular song. So it was again a very motivational one personally for me. And this one too, this one came on pretty late, but it was also very motivational for me, right? हेलो, हाँ यार अमृतेश, कैसा गया तेरा मॉक? यार मेरा तो सही गया, 675 मार्क्स आए थे. नाइस, तेरा भी सही है यार. वो वाले क्वेश्चन का क्या किया था अपन ने, जो 4th क्वेश्चन था फिजिक्स में? यार हाँ, मैंने भी उसमें वैल्यू नहीं पढ़ी, तूने भी वही किया. अच्छा, एक मेरे को वो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का समझाइयो, जो क्वेश्चन वो था जिसमें टाइम लेकर रख लेना सर से.
चल यार, ओके ओके, बाय बाय। सो दिस वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स अमृतेश, एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम जो भी पेपर देते थे उसको जनरली डिस्कस करते थे, सो दैट वी बोथ लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड ऐसे काफ़ी घंटे कभी कभी कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी चलती थी, वेयर वी वुड डिस्कस आउट एवरीथिंग। एंड जब भी कोई चीज़ डिस्कस करो या कोई भी कॉन्सेप्ट अपने पियर्स से समझो, तो कभी कभी वो ज़्यादा बेटर समझ आता है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम मिस्टेक्स एंड द लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मच सिंपलर, मच बेटर. So I think that's more than enough study for today. So now what I'm going to do is I'm going to take this planner and कल जो मुझे करना है I'll just write it down before I go to sleep. उससे क्या होता है, the next day when I wake up I don't have to think कि मुझे क्या करना है. I've already decided that if today I did plant breeding, tomorrow I have to do this chapter from botany. Okay, so tomorrow I might think of doing ecology, उसमें environmental issues वाला chapter. Then I did physics today, I might be doing chemistry tomorrow. So let's say tomorrow I'll be doing inorganic chemistry में P block. So I will plan this out and tomorrow मैं ये दो चीज़ें करने का try करूँगा. And day after tomorrow I'll try to do one unit of physics, maybe try to do thermodynamics थोड़ा सा revise करके. And similarly I'll also plan a mock test for tomorrow. कल मुझे कौन सा mock test करना है. And that's the way I'm going to plan. And जब मैं ये करके सोता हूँ, my sleep is very peaceful because I know कि मैंने अपना आज का target accomplish किया एंड मैंने अपना कल का टारगेट भी सेट किया हुआ है. ऑलराइट, तो चलो सो जाते हैं. दैट्स इट, दैट्स अबाउट द एंड ऑफ माय डे.